Good morning, ma'am. 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 Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Good morning, children. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. सबको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना? Yes, ma'am. Now, yesterday we were on the topic of different terms related to concave and convex lenses. ये हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे. Have you all understood? सब लोग अंडरस्टैंड कर गए थे what we were discussing? या किसी को कोई डाउट है? All of you mute your mic. Mic mute करिए सब लोग. Those who have problem they can unmute and tell me. मैम हल्का सा should I revise? एक बार रिवाइज करवा दें आप लोग फिर से. यस मैम, रिवाइज करवा दीजिए एक बार. ओके, तो पहले शुरू से देख लो फर्स्ट टर्म से. This you have understood that we have got two types of lenses, concave and convex. ठीक है? तो when we are taking this is constructed or it can be made by the help of a sphere, a spherical surface. अब आप देखो, there are three types of in three ways we can make the convex and concave lenses. First, if it is bounded by curved surface on both the sides, then it is known as double convex. Then if it is plane on one side and curved on the other side, then it is known as plano-convex. And if it is converging from both the side, means both the side, if it is converging, then that is known as converging meniscus. Then in the same way, if it is curved from both the side, then it is double concave. If it is plane from one side and curved from the other side, then that is plano-concave. And the third one is, if it is curved from both the side, then that is diverging. यहाँ तक आप लोग को क्लियर है या नहीं? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तब अब हम लोग आते हैं different definitions, some definitions which are related to. So first of all, the first term was center of curvature. Then what I told you yesterday, कोई एक बच्चा बताओ center of curvature किसको बोलते हैं? The central point of a spherical mirror. Center of point of spherical mirror. Center of a spherical. Center of The curvature center is the center of point. sphere. हाँ, तो अगर मान लो ये आपका स्फेरिकल सरफेस है, तो इसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर? यहाँ पर हमारा दो कर्व्ड सरफेस है, and from this two curved surface we have made the
convex lens and concave lens. Clear? So here दोनों का एक सेंटर होगा, C1 and C2. C1 and C2, center of curved surface 1 and center of curved surface 2. So this is center of curvature. Now all of you know that to draw a sphere or a circle, we need a radii. जितना radius का हमको curved surface बनाना होगा, either it will be smaller or bigger. जितना radius हम लेंगे, कम लेंगे तो छोटा सर्कल बनेगा, ज्यादा लेंगे तो बड़ा सर्कल. So this is radii 1 and radii 2 of the curved surface. तो आप इसको radii of curvature को कैसे define करोगे? The radii of the two sphere of which the lens surface are apart are known as the radii of curvature. और simple word में आप समझो, the radius of the sphere is known as the radii of curvature. Is it clear? आप simple language में रेडियस किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए रेडियस लेते हैं ना, तो that radius is known as radii of curvature because it is a curved surface. Clear? अब third point, principal axis. Principal axis किसको बोलते हैं? The line joining the center of curvature of the two surface. ये dotted line जो जा रहा है, यहाँ दोनों surface को जो join कर रहा है, इस curved से C2 and C1, ये center को जो join कर रहा है, that is known as principal axis. Now children, one thing you tell me, is it an imaginary line or is it present in the curved surface? Imaginary line. Imaginary line. It is an imaginary line. जैसे इक्वेटर हमारा इमेजिनरी लाइन होता है ना, अर्थ को दो भाग में डिवाइड करने का, उसी तरह से ये भी इमेजिनरी लाइन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट. ठीक है, तो दो सेंटर को ज्वाइन करता है, इसमें भी देखो, दिस इज योर कन्वेक्स और ये कनकेव. दोनों के केस में आपको दिख रहा होगा कि the two centers are being joined by a line and that is known as principal axis. Is it clear? Yes, ma'am. चलो. Yes, ma'am. Optical center. Now, अब आप लेंस बना लिए, लेंस बन गया, this portion is your lens. सर्कल से हम लोग लेंस बना लिए, तो उसका भी एक सेंटर होना चाहिए ना. So that center which is there in that optical structure, that is known as optical center. ये optical center का optical, suppose this is your optical structure, यहाँ से हम ले लिए, इसको अभी हम यहाँ एक नया स्ट्रक्चर बनाए, तो इसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, बिकॉज नाउ इट हैज बीन डिटैच्ड फ्रॉम दैट स्फीयर. उस स्फीयर से हम उसको निकाल लिए, तो उसके बाद उसका सेंटर डिसाइड करेंगे कि उसका सेंटर कौन सा है, एंड दैट इज नोन एज ऑप्टिकल. क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. पॉइंट वाइज बताओ, हमको फीडबैक दो ताकि हम आगे बढ़ सकें. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In case of convex and also in concave. Then after that comes your principal focus and focal length. Principal focus को समझने के लिए first you will understand second principal focus. पहले उसको समझो, फिर first principal focus भी बताएंगे. Here, a beam of rays, several rays, if they are passing from an optical body, then that is known as beam of rays. So several, 1, 2, 3, 4. 4 rays are passing from this convex lens. Clear? Then it will meet at a point after getting passed from that reflecting surface. और ये कहाँ पर meet करेगा? एक point पर meet करेगा, converge करेगा. In case of convex lens. Convex lens के केस में हम word use करते हैं converge. So it will converge at a point and that is known as focus, principal focus. But that is your second principal focus. And the distance from this point to the optical center, इसको हम बोलेंगे second focal length. Clear?
In the same way, यहाँ हम converge word use किए हैं. Here we will use diverge. Here what happens? Again a beam of ray is passing from this optical body, and then we assume that it will come and meet at this point, which is on the principal axis, and it will, or we can say that it will diverge to a point which is known as second principal focus, and the distance from second principal focus to the optical center. Second principal focus से optical center की दूरी को second focal length. That will be called as second focal length. Any doubt to anybody here? No, ma'am. No, ma'am. सब लोग बोलो. Ma'am. बताओ, just No, give the ma'am. feedback. No, ma'am. ठीक No, है, ma'am. सब समझ गए? No, ma'am. First principal focus. First principal focus क्या? Now again this is your optical body. इसमें हम बात करेंगे कि when a ray of light is passing from the principal axis, only one ray, not here the beam of rays. एक ray अगर principal axis से pass करता है, and if that ray becomes parallel to the principal axis after passing from the lens, then that is known as first, that point or through which it is passing from the principal axis, that point will be known as first principal focus. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ये रे यहाँ से पास कराओ तो वो पैरेलल हो जाए. हो सकता है आप यहाँ से पास करता है कोई अगर रे, तो वो पैरेलल नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर वो पैरेलल होता है तो that point is known as first principal focus. Maybe आप principal axis से किसी भी point से आप पास करवाओ, वो नहीं हो सकता है. May happen that it will not become parallel. तो जो जिस point से वो parallel हो जाएगा, उसी point को हम first principal focus कहते हैं. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से फिर उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम फर्स्ट फोकल लेंथ बोलेंगे. वी विल कॉल इट एज फर्स्ट फोकल लेंथ. क्लियर? Yes, जैसे ma'am. ये फर्स्ट प्रिंसिपल Yes, ma'am. फोकस हुआ तो उसका लेंथ को हम मेजर करेंगे ना, ऑप्टिकल सेंटर से उसकी दूरी को मेजर करेंगे. तो जब वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हुआ, देन दैट लेंथ विल बी कॉल्ड एज first focal length. Is it clear? किसी के पास कोई क्वेश्चन है? Yes, ma'am. Anybody has any question or you have not understood? You can ask here. आप पूछ सकते हो. Confusion होता है, children. If you are having any new topic, then the confusion might be there. In the same way, इसमें भी क्या होगा? एक रे पास कर रहा है और we assume that, यहाँ assumption हमेशा रहेगा. It will be always assumption in case of your concave lens. We assume that it will fall to a particular point on the principal axis, and that will be the first principal focus because it is becoming parallel to the principal. क्योंकि वो रे parallel हो रहा है principal. ठीक है? चलिए. So we have revised the topic, yesterday's topic. कल का topic का revision हम लोग का हो गया. Yes, ma'am. Now today we will start with again the rule on which this concave and convex lens work. There are three rules on the basis of which, जैसे हम लोग reflection में भी देखे थे, diffraction में भी देखे थे, in the same way lenses also work according to their rule. Clear? So what are these three rules that we will मैम see? मैम ये कन्वेक्स लेंस में मैम अगर राइट से बीम ऑफ लाइट पास करता है और फिर एक जगह कन्वर्ज होके लेफ्ट में अगर कन्वर्ज होके एक पॉइंट पर मिलता है तो उसको भी सेकंड फोकस बोलेंगे कि उस कैमरा ऑन है उसका. मैम राइट से. राइट से पास करे या लेफ्ट से पास करे उससे मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ दोनों रिफ्लेक्टिंग ही सरफेस है ना.
युवा से छीन के दो उसको, बोल रहा है। मैम तो ऑप्टिकल सेंटर सुनो मामी से। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो दोनों ही है ना इस केस में। यस मैम। हाँ। मैम तो ऑप्टिकल सेंटर इस तरह का डायग्राम शो करने के लिए, बट आई हैव नॉट सीन एनी डायग्राम व्हिच इज रिलेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस तरह का डायग्राम मैंने कभी किसी को नहीं देखा। But it may affect your scenario because both sides are having reflecting. वो opposite हो जाएगा, वो डायरेक्शन opposite हो जाएगा। चिल्ड्रेन आपस में बात नहीं करिए। कोई दिक्कत है तो हमको बोलो ना। पीयूष कुमार, पीयूष कुमार AF। Now we will come to the 3 rules. Three special rules for the lenses. What are these 3 special rules? Let us see. इसका डायग्राम भी हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद Now children, आप देखो, just see this diagram. Diagram को देखिए. Are you able to understand this diagram? Diagram समझ रहे हो कुछ? Yes ma'am. Yes, क्या ma'am. समझ रहे हो? कैसे explain करोगे? First rule क्या है? This is your first rule. What you are understanding? मैम when a ray of light is falling parallel to principal axis become after Will fall on the second focus of on the principal axis. Optical center is reflected on the focus. Principal axis. दूसरा क्या है?
A ray Ma'am, when passed it through a ray the of light reflected optical the optical center of and the reflected lens to the optical goes center. undeviated from the lens. Okay, very good. तीसरा क्या है? Ma'am, When the ray of When A ray of light passes from first focus become focus parallel of to the lens principal axis. or directed towards it Very good. become parallel That to the means you principal are axis. understanding. इसका मतलब आप समझ रहे हो कि मैंने क्या ड्रॉ किया. First of all, a ray which is parallel to the principal axis will pass from the focus. This is first rule. Second rule is a ray which is passing from optical center will go undeviated. ये हम एक एरो आपको जान कर दिए हैं ताकि आपको अनडेविएटेड का सिंबल पता चले, उसी पाथ पर वापस चला जाए. Then next is a ray which is falling on the focus will become parallel to the principal axis. These are the three rules, and in that same way for your this concave lens also we can say that a ray which is parallel to the principal axis will fall. We assume that it will fall on the focus. A ray which is passing through the optical center will go undeviated. And third rule, a ray which is passing from the focus, we assume that if it will become parallel after passing from that concave lens. Is it clear to all of you? ये three rules you should know, and then only we can discuss about the convex lens. Because in concave lens, children, there is only one position where the image is formed. एक ही position पर image बनता है concave lens में. But wherever you keep the object, आप कहीं भी रखिए, and that image is between the optical center and focus. ये आप देख सकते हो पेज नंबर 145. In between focus और optical center के बीच में ही बनेगा. That is the fact about the concave lens. But when we talk about convex lens की अगर बात करते हैं, then there are certain situations, अलग-अलग situations है, on which when we are keeping the object, then there will be changes in the position of the image. So first क्या है? First is object at infinity. If object is at infinity, then the image will be formed at focus. I'm just giving you the reference today. Tomorrow with the diagram I will explain. क्योंकि अभी हम लोग का थोड़ा reading portion भी बचा हुआ है. Then after that, if the object is beyond 2f, then the image will be formed between f and 2f. If the object is at 2f, the image will be formed at 2f. If the object is between f and 2f, then image will be formed beyond 2f. If the object is at f, then the image will be formed at infinity. In all these situations, children, there are real image formed in case of convex lens. Only one situation is there when the object is between optical center and the f point, that is focus point, then the image is virtual. Other situations, it is always real. Clear? तो एक बार कल आप लोग इस टॉपिक को रीड करके आओगे क्लास में, convex lens का अलग अलग positions. Then we will have the diagram on the blackboard and then we will have the explanation. Elaborate explanation. अभी आप लोग तब तक रेनबो का तक हो गया था, लेंसेज का थोड़ा रीडिंग डाल लीजिए ताकि आप लोग का ये हो जाए, रिकॉल हो जाए, and then we will move forward. Clear? मैम हाँ बोलिए. मैम कॉन्केव का लास्ट वाला इमेज मैम सही नहीं समझ में आ रहा है. ये यस मैम. देखो यहाँ से एक रे कोई भी रे चल रहा है, अगर वो रे हम अज्यूम करते हैं कि वो फॉल करेगा पैरेलल होने के बाद, वो फॉल करेगा एफ पर. जैसे ये है ना कि फोकस से पास कर रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा. तो यहाँ तो हम रियली देख रहे हैं कि वो पैरेलल हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि वो एफ पॉइंट पर फॉल करेगा और वो पैरेलल हो जाएगा. दैट इज द अजम्पशन. वहां भी वही सेम चीज है, लेकिन डायग्राम में क्योंकि वो कनकेव है और वो कन्वेक्स है तो डिफरेंस है.
देयर इज अ assumption, always a assumption. ऐसा है डायग्राम, देखो थोड़ा क्लियर कर, ये आपको ऑप्टिकल सेंटर हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यहाँ से कोई रे चला और ये तो वो कहाँ फॉल कर रहा है, ये रे, एनी रे विच इज पासिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही फोकस बनेगा ना, तो यहाँ पर हमारा अजम्पशन रहता है ये रे जो पास करने के बाद पैरेलल हो रहा है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि वो एफ पॉइंट पर फॉल करे, तो यहाँ फॉल करे, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ ये फॉल, क्लियर, इज इट क्लियर? यस मैम। अब हम लोग एनीबॉडी, कोई एक बच्चा स्टार्ट करो लेंसेज से रीडिंग, स्टार्ट, कोई भी एक बच्चा। Besides the glass slab and the prism, it is lenses that are used very often for studying and using the effects of refraction. A lens is a portion of a transparent refracting medium bounded by two surfaces. When both or one of these surfaces are or is spherical, the lens is known as spherical lens. Spherical lenses are of two types, convex or converging lenses and concave or diverging lenses. The common shapes of these two types of lenses are shown below. Definitions of some lens-related terms. Let us first understand the meanings of a few terms relevant to the lenses. Centers of curvature. Each of the two surfaces of a spherical lens can be regarded as a part of a sphere. The centers of these two spheres are known as the centers of curvature of the two surfaces of the lens. Radii of curvature. The radii of two spheres of which the lens surfaces are a part of are known as the radii of curvature of the two surfaces of the lens. Principal axis. The line joining the centers of curvature of the two surfaces of a lens is known as its principal axis. Optical center. The optical center of a lens is a special point on its principal axis. A ray of light passing through the optical center of a lens goes straight through it without undergoing any bending or deviation from its path. Principal focus or focal length. It turns out that if a beam of rays all parallel to the principal axis of a lens falls on the lens, all such rays either all converge to a point on its principal axis or appear to diverge from a point on its principal axis. We call this point as the second principal focus of the lens. The distance of the second principal focus from the optical center of a lens equals the second focal length of the lens. Do you know the principal focus of the lens, as you just read, is really the second focus of the lens, and the corresponding focal length is the second focal length. We also define the first focus and the first focal length of a lens. This is done as follows. First principal focus or focal length. The first principal focus of a lens is a point on its principal axis such that if a ray of light passes through it for a convex lens or it is directed towards it for a concave lens, it becomes parallel to the principal axis after refraction by the lens. We call the distance of the first principal focus from the optical center of the lens as the first focal length of the lens. Usually, the first and the second focal lengths of a lens are equal to each other. They can, however, be different from each other in certain situations. Three special rays for lenses. कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। Children, please be frank. कुछ अगर पूछना है तो बोल सकते हो। हाँ? Okay, then move forward. ठीक है, चलो। Three special rays for lenses. We can use the ideas and definitions you read on the previous pages to draw
ray diagrams for lenses. These ray diagrams help us to know the nature, size, and position of the image formed when an object is kept at different distances from the lens. We generally use two of three special incident rays described below to draw all these ray diagrams. First, an incident ray parallel to the principal axis passes through what appears to come from the second principal focus of the lens. Second, an incident ray passing through the optical center of the lens goes undeviated from the lens. Third, an incident ray passing through the first principal focus of the lens or directed towards it becomes parallel to the principal axis after refraction from the lens. Let us now see how we can use any two of these special incident rays to draw ray diagrams for different object positions for a convex lens and for a concave lens. Now here children, one thing to keep in mind, एक चीज आप ध्यान दोगे कि these rules are made just to describe the nature and position of the image when we are going to study about convex and concave. ये जो आपका rules बना है, that rules are applied over there, and then only we can see that how according to the rule, when we change the position of convex and concave lens, then where will the image be formed, and that all will be justified according to the rule. इसीलिए ये rule remember करना बहुत जरूरी है. So tomorrow all of you just memorize this rule and then just go through the convex lens and concave lens position according to the diagram. Then it will be easier for you to understand in the class. यहाँ पर क्लास में समझना आप लोग के लिए ज्यादा आसान होगा. क्लियर? मैम एक क्वेश्चन था कि जब वाटर से परपेंडिकुलर रे जाता है तो वो 0 डिग्री रिफ्रैक्शन करता है, लेकिन जब लेंसेज से 90 डिग्री जा रहा है तो वो बेंडिंग कैसे फॉर्म हो जा रहा है? कहाँ पर लेंसेज से 90 डिग्री जा रहा है? कहीं 90 डिग्री तो नहीं जा रहा है मैम, मतलब स्ट्रेट जा रहा है ना? कहाँ जा रहा है स्ट्रेट? कोई भी रे मेरा स्ट्रेट कहाँ है? वो 90 डिग्री नहीं है. ये तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से. 90 डिग्री होगा तो ऐसे होगा ना, वर्टिकल होगा ना. ये तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है. 90 डिग्री यहाँ कोई भी रे नहीं जा रहा है. ये भी आपका एक एंगल पे है. यस मैम. None of the rays are going at 90 degree. Clear? यस जब भी मैम. कोई आपको डेविएशन शो करना है या रिफ्लेक्शन शो करना है तो वो एक एंगल से ही होगा, 90 डिग्री पे नहीं होगा. यहाँ भी कोई 90 डिग्री पे नहीं जा रहा है. कहाँ पर जा रहा है बोलो? None of the rays are at 90 degree. Clear? यस मैम. 90 डिग्री पे कोई नहीं है. ये रे भी जो जा रहा है ये भी 90 डिग्री नहीं है. एक that will always be tilted at an angle apart from 90 degree. 90 डिग्री से दूसरे एंगल पे रहेगा, नीचे रहेगा. वो 90 डिग्री पर कभी नहीं हो सकता है रिफ्लेक्शन. ठीक है? यस मैम. चलो और कुछ डिस्कस करना है? So your homework आप लोग नोट करो. Homework will be to go through this chapter पूरा completely, and especially these rules you should know so that tomorrow we can understand the nature and position of the image formed by convex and concave. Clear? ठीक है? कोई queries है तो put up करो. Anybody? Put up your queries if you have. Children, one thing what you have to do here. हाँ बोलिए. मैम कह रहे कि इस वाले लाइन को मैम क्या? कौन से लाइन? मैम इस वाले लाइन को. मैम इस वाले लाइन को मैम. आपका पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है, उसको बिगर करो. वो इमेजिनरी लाइन है वर्टिकली इसको डिवाइड करने का, वो उसका कोई नाम नहीं है. वो जो आप ये लाइन बोल रहे हो ना, ये लाइन जो डायग्राम में दिया हुआ है वर्टिकल लाइन. ठीक है?
यही वाला लाइन ना, यस मैम। उसका कोई नाम नहीं है, उसको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया गया है ताकि आपका वो शेप जो है वो सेंटर में आए। वो सेंटर पोजीशन है हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली, ठीक है, उसका कोई नाम ओके नहीं है। मैम, ओके मैम। ठीक है, ओके। और कोई कंफ्यूजन? नो No, मैम। ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, then have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.